seconds ago. You're on it. हेलो एंड वेलकम टू एम ए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। तो जैसा कि आप सब अब तक तो जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जो मुबैना घुसपैठ हुई है और जो दहशतगर्द 4 दिन हो गए उन्होंने एक तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था जंगलों में। हालांकि गिनती के लोग थे, लेकिन वो पहाड़ों के ऊपर जो है जंगल का फायदा उठा के छुप के वार कर रहे हैं। और कल जो है वो हमारे एक भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत और इसी तरह से हमारे एक जो है वो और मेजर आशीष और एक हमारे डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इसके अलावा ये तो कश्मीर में शहीद हुए। इसके अलावा राजौरी में हमारे राइफलमैन रवि और एक कुत्ता जो था कैंट के नाम से, वो भी आतंकवाद का शिकार हो गए। तो ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, मैं आपको इसके कुछ आज प्रदर्शन हुए, हमारे लोग वहाँ पे श्रीनगर लाल चौक पहुंचे हैं इमरजेंसी में। ज़ाहिर है बड़ा मुज़ाहरा तो बाद में होगा, फिलहाल तो वो मोमबत्तियां वगैरह लेके आए थे। वो वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बच्ची की वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पीओजेके में खड़ी है और दरिया के इस पार और दरिया के उस पार उसकी उसके ताया हैं और उनकी फैमिली है और कजन्स हैं, और वो पार जाना चाहती है उनको मिलने के लिए। लेकिन ये जो दरिया है और ये जो नाम निहाद लाइन ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान का जो कब्जा है हमारे इलाके पर, इसकी वजह से वो भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर अपने परिवार वालों को मिलने के लिए नहीं जा सकती। देखिए इस लड़की की बेबसी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? कैमरे में बता दे ना। हाँ, सच्ची बात बता दो, आप जानी चाहती है क्या उधर रिश्तेदार हैं आपके? कश्मीर में आपको वो प्यारा लगता है? वाह, नहीं, कौन है उधर आपका? कैमरे में बताए ना, वो भूल जाएगी। तायाबू हैं आपके उधर, और कौन है? अभी आए हुए हैं मुलाकात के लिए? किस जगह पे? फुफू आई हुई हैं? तो अभी आपकी उनके साथ मुलाकात हुई है यहाँ से दरिया की तरफ से? क्या बोल रहे हैं वो? कोई बात भी हुई है? इशारे हुए हैं या बात भी हुई है? हाँ, बताओ ना बेटा, क्या बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो? इधर बुला रहे हैं? अच्छा, तो आपने उन्हें कहा आप भी इधर आ जाओ, क्या कहते नहीं आ सकते? कब आएंगे? पता नहीं। अच्छा, आपकी आज पहली बार मुलाकात हुई है उनसे? इससे पहले कभी नहीं देखा उन्हें? फोन पे देखा है। अच्छा, तो आपके सारे रिश्तेदार उधर हैं टोटली? अच्छा, आप रो तो नहीं ना अभी? आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उधर जाओगी, वो इधर आएंगे। हाँ, दम घुटता है गुंबद सिगरा में। नाज़रीन, ये आपने इंतहाई दुखी वीडियो देखा है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का बचपन ऐसे ही गुजरा है। हमारे वालिद साहब बच्चों को लेके दरिया पे खड़े हो जाते थे और पार से जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी हमें इसी तरह से दूर दूर से इशारों में या लाउड स्पीकर जो थे हाथ में लगा उससे बात कर लेते थे। शादी होती थी तो वो दुल्हन बना के इधर से हम ले जाते थे। उनकी तरफ कोई शादी होती थी तो वो अपनी बारात जो है वो ला के दिखा देते थे कि जी ये देखो हमारे घर में बारात आ गई है। तो मौत मर्ग हो जाए तो उसके ऊपर भी कई दफा ऐसा हुआ है कि नमाज जनाजा जो है वो दरिया के आर पार पड़ी गई। यही वो बंटवारा है जो पाकिस्तान ने पैदा किया। पहले हिंदुस्तान का बंटवारा करवा के और फिर रियासत जम्मू कश्मीर का बंटवारा करवा के, जिस बंटवारे के खात्मे के लिए मेरे वालिद के बाद मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजार दी है।
ये बंटवारा किसी तरह खत्म हो। और जाहिर है मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो रहा हूँ जहां मेरी ख्वाहिश जो है वो अब बेताबी में तब्दील हो रही है। तो अब ये सारी सूरत हाल है और फिर होता है एनकाउंटर। और एक जो है वो कर्नल साहब जो है मनप्रीत सिंह, वो शहीद होते हैं। मेजर जो है आशीष, वो शहीद होते हैं। डीएसपी मायूं भट्ट साहब शहीद होते हैं। रवि शहीद होता है। तो ये अभी एनकाउंटर शायद जारी है। मुझे अभी ताज़ा तरीन इतला मेरे पास नहीं है कि वो अभी ओवर हो गया या नहीं, लेकिन कुछ देर पहले ये सुनने में आया था कि वहाँ जो अनंतनाग के पास जो जंगल हैं वहाँ पे जोरदार धमाकों की आवाज आई है, जो गालबन मेरा ख्याल है राष्ट्रीय राइफल वालों ने मोटर गोले फेंके हैं वहां पे। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा ना। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आज के श्रीनगर की ये वीडियो देखें। ये सब मुसलमान लड़के हैं जो निकले हैं वहां पे। और इनमें से ये जो फौरी तौर पर हुआ है, ये किया है सैफुल्ला फारूक साहब ने। सैफुल्ला फारूक साहब पहले खुद जो है वो जहादी तंजीम के मेंबर थे, फिर इन्होंने उनकी असलियत देखी और उनको छोड़ा, और फिर इन्होंने जय भारत माता के नारे लगाए। और इस वक्त ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये वीडियोस मुझे खुद श्रीनगर से भेजी है। उन्होंने ये छोटा सा एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट और कैंडल लाइट्स के साथ ये ऑर्गेनाइज किया है। देखिए ये वीडियोस। दर्दनाक जो 3 हमारे सपूत हिंदुस्तान के जो शहीद हुए हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं। जिन्होंने उनको मारा है वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अभी कॉर्डिंग चल रहे हैं वहां पर। जो बरसात जो वहां पर मनप्रीत सिंह और अभिजीत जो कर्नल थे, तीनों सिपाही भारत के इस पवित्र इसमें शहीद हुए हैं। उनकी हम मदद करना चाहते हैं कि जो उग्रवादी बच नहीं पाएंगे। मैं पाकिस्तान को भी चेतावनी देता हूं, जो एक टट्टू हो यहाँ पर कश्मीर में लाते हो, यहाँ पर क्लिक करवाते हो, लेकिन कितनी देर हम आज बहुत सख्त हो गया। आज हमारा मुल्क, आज हमारा भारत, आज हमारा हिंदुस्तान जो मोदी जी ने बनाया है वो आज सफल है। और यहाँ पर जो भी उग्रवादी थे वो नाबूद हमने करवाए, लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द नाबूद हो जाएंगे इस धरती से दूर। और पाकिस्तान को मैं चेतावनी देता हूँ, आपके वहां पर जो पीओके के है वो भी चाहते हैं कि मोदी जी हमें हिंदुस्तान के साथ मिलो। वहां पर भी आप देखो गर्व कितना होता है। जो इसको अपना मुल्क संभाला नहीं जाता है वो क्या संभालेगा दूसरे देश को। लेकिन हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर भाईचारा आज भी कायम है। और जो यूथ हमारे हैं वो यूथ को भी हम अपने साथ लाते हैं। और यहाँ पर देखिए दुकानें, यहाँ पर देखिए हमारा कश्मीर कैसे सुंदर बन गया है। और ये सब मोदी जी की देन है। और सब युवा जितने भी पत्थरबाज थे वो भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज जो शहादत 3 जिसमें भट्ट साहब है, जिसमें अभिजीत और मनप्रीत जी है, उनको हम शहादत श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और उनको हम नम आंखों से ये श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द जिन्होंने इन कांड किया है उनको मौत के घाट उठाना जाएगा जल्द से जल्द। आप देखोगे कल के सुबह की न्यूज में वो मारे गए हैं, लेकिन जो 3 सपूत जो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि पेश करते नम आंखों से। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, मुस्तशीर, मुस्तशीर। कितनी देर हम आज
बहुत सख्त हो गया आज हमारा मुल्क, आज हमारा भारत, आज हमारा हिंदुस्तान। कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि आपके लिए ये सुधरने का मौका है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। आपने 30 पाकिस्तान है वो नातनाबू तो आगे हो गया है, लेकिन जो टट्टू बेचते हैं ना, बाड़े के टट्टू यहाँ पर, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे जवान मुस्तैद है, हमारी आवाज ये इंसानों का इंसान बचो आलम पाकिस्तान मेहरबानी कर दहशतगर्द अगर नशा यह बंद कर पीओ के दहशतगर्द मनोख जबरदस्ती और तुम भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, आर्मी हिंदुस्तान जिंदाबाद। यह 1971 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पीओ के भी छोड़ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि जो वहाँ पर सलाउद्दीन बैठा हुआ है, अगर मसूद बैठा हुआ है, उनको हम गिरेबान से पकड़कर यहाँ लाएं और फांसी के फंदे पर पहुँचाएं या फरो किरदार तक पहुँचाएं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियोस देखी हैं। इस वक्त जाहिर है कि कश्मीर का नौजवान जो है, मुसलमान नौजवान खास तौर पर, वो भी अब तंग पड़ गया ये पाकिस्तान की घुसपैठ से। वो भी अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए। हालांकि इन लड़कों को भी दहशतगर्दों से खतरा है, दहशतगर्दों के एजेंटों से खतरा है, लेकिन ये अब इतना वहां पे तंग आ चुके हैं और जो वहां प्रोस्पेरिटी आई है 370 के खत्म होने के बाद, उससे इतने मुतासिर हैं कि कई लोगों ने वहां पे जो बंदूक और पत्थर का रास्ता है वो तर्क कर दिया है, क्योंकि उनको पता लग गया कि पाकिस्तान उनको बेवकूफ बनाता रहा है कि तुम लोग बंदूक उठाओ, तुम लोग पत्थर मारो, पाकिस्तानी फौज तुम्हारे पीछे खड़ी है, कल पहुंच जाएगी श्रीनगर। खैर, ये जो एनकाउंटर हुआ है इसके हवाले से आज आपके साथ मैं शरीक गुफ्तगू कर रहा हूँ मेजर जनरल AK सिवाज साहब को। फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के वो चीफ रहे हैं, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में उन्होंने सर्विस की है, एक एक चप्पे को जानते हो जम्मू कश्मीर के। जनरल साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। नमस्कार मिर्जा सबसे साहब। पहले तो जनरल साहब, आपने ये बच्ची की वीडियो देखी है, क्या आपकी फीलिंग है इस बच्ची की वीडियो देखने के बाद? और इस बच्चे की वीडियो देखने के बाद एक ही फीलिंग है कि जल्दी से जल्दी जो POJK है और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहिए। ये हिस्ट्री ने डिवाइड किया है। देखो बच्ची खड़ी है, उसके जो रिलेटिव भारत की तरफ खड़े हुए हैं वो मिलना चाहती है, और यही अब मेरे को लगता है आवाज बहुत लोगों से आने लगी है, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो, कोटली हो, झांगड़ हो, या आपका लद्दाख के अंदर जो अपोजिट हमारे स्कार्दू का एरिया है गिलगित पाकिस्तान का। तो ये आवाज इतनी तेज बुलंद होती जा रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो देख के किसी का भी मान पिघल जाएगा। अब भारत को कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी POJK और गिलगित पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए। ये समय आ गया, ये वार्निंग दे रहा है कि अब ये मुझे लगता है राइट टाइम है, इस पर कुछ न कुछ हरकत होनी चाहिए और इसको भारत के अंदर मिला लेना चाहिए, जो भारत का असली अटूट अंग है। तो जनरल साहब, ये अब एक तरफ ये बच्ची रो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ ये एनकाउंटर चल रहा है अनंतनाग में और राजौरी में। ये एनकाउंटर जो है इसमें हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे एक कर्नल साहब जो है वो शहीद हो गए, एक मेजर साहब शहीद हो गए, एक DSP शहीद हो गए, एक राइफलमैन शहीद हो गया, एक ट्रेंड हमारा डॉग जो था 8 साल उम्र थी उसकी, वो भी मारा गया इसमें। तो ये एनकाउंटर कैसे आप इसको देख रहे हैं और इसका क्या तोड़ है, ये कैसे खत्म हो? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, दीवा बुझने से पहले फटफड़ाता है, तो वो हालात है। इसमें कोई शक नहीं कि जो आतंकवाद का बिल्कुल एंड आ गया है जम्मू कश्मीर में,
कोई 50 से 60 के करीब आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी के अंदर। बाकियों का काम तमाम कर दिया। ये भी वो है जिनके पास अम्यूनिशन और वेपन की कमी है। और सच्चाई यह है कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, अमन और शांति है। वो आपने लाल चौक पे देख लिया किस प्रकार से नारे लग रहे थे। वहां पर डेवलपमेंट का माहौल है, वहां पर सड़कें बन रही हैं, IIM बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉलेज और पंचायत के। अब ये चीज कहीं पाकिस्तान को समान नहीं रही। ऊपर से हो क्या रहा है कि जहां POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में अब जो लोग इन्होंने विद्रोह कर दिया है, सड़कों पे आ गए, अब पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान हमारे हाथ से निकल जाए। और ऐसे में इनकी 2-3 चीजें और हुई हैं जिससे पाकिस्तान की आर्मी और ISI बिल्कुल वो चाहती है कुछ करें यहाँ। एक तो ये जो G20 की मीटिंग हुई है वो बहुत सक्सेसफुल, एक चंद्रयान 3 हमारा लैंड किया है साउथ मून पे, वो भी। तो ऐसा लगता है कि ये जो अब जो आतंकवादी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो अब उन्होंने अपनी टैक्टिक थोड़ी चेंज की है। एक तो ये जो इलाका पुंछ और रजौरी का था ये डोरमेंट था कई सालों से, 10-15 सालों से। अब वो वहां उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद वहां से हम आतंकवाद को बढ़ाएं, मगर वो बिल्कुल फेल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जो कश्मीर है जहां पर ये कोकरनाग, जहां अनंतनाग के पास वहां ये हादसा हुआ है, वहां 60 से ज्यादा आतंकवादी नहीं है टोटल में। मगर ये हादसा जो हुआ है, अब क्या हुआ है, टेररिस्ट गांव वगैरह में हायर रिचेज में चले गए, पहाड़ों पे चले गए हैं जहां पर डेंस फॉरेस्ट है और एक प्रकार से पहाड़ी इलाका है। और ये एक खबर की 2-3 टेररिस्ट छुपे हुए हैं हाइड आउट में, उसके ऊपर ये ऑपरेशन हुआ था। और मुझे लगता है कि जो सोर्स था वो भी हो सकता है डबल क्रॉस कर गया हो कि जब ये ऑपरेशन का ये कॉलम जा रहा था तो आतंकवादियों ने उसको देख लिया, क्योंकि हायर रीच पे तो इनिशियल जो फायर है उस पे ये कैजुअलिटी हुई है, चाहे कर्नल मनप्रीत की हुई, मेजर आशीष की हुई या अब DSP हनुमान भट्ट की। मगर ये सच्चाई है, इन आतंकवादियों को घेर लिया है। ये 3 के करीब आतंकवादी हैं। गुजर खान भी है इसके अंदर जो कि LAT का कमांडर था वहां उस इलाके का। और 2 जो अदर टेररिस्ट हैं वो भी जो पाकिस्तान के से भेजे हुए आतंकवादी हैं, उनको घेर लिया गया है और अगले चंद एक समय में उनका काम तमाम हो जाएगा। ये सच्चाई है। आज की तारीख में पाकिस्तान बुखला गया है और पाकिस्तान को लग रहा है कि उनके हाथ से POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान निकल गया है और कश्मीर तो भूल जाए। और कश्मीर में अमन शांति पहली बार इस प्रकार का मुजाहरा किया है लोग कैंडल से, और लोग सरेआम कश्मीर घाटी के अंदर और श्रीनगर में अपने उन वीर गति में जो बलिदान दिया देश के लिए उनकी प्रेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरा बदला हुआ माहौल है। ये पाकिस्तान का ऐसे करने कुछ नहीं हुआ। मगर मैं ये बताऊंगा अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिस प्रकार से हर रहा है वो मानने वाला नहीं। उसके अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी उनके निगेरिया में बैठे हुए हैं लैस वो अमेरिकन हथियारों से जो अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ दिए। इसके अंदर असॉल्ट राइफल भी है, स्नाइपर भी है और LMG भी है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया, जैसे बालाकोट में जाके आता इन ट्रेनिंग एरिया जहां का हमें मालूम है उनको यहीं से हिट करना चाहिए। अब हमारे पास काबिलियत तो क्षमता भी है, हम यहीं से उनके ऊपर हमला करके अटैक करके और उनको बर्बाद कर सकते हैं बिना LOC क्रॉस किए। तो करने का जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानेगा नहीं। पाकिस्तान खुद डूबने वाला है, पाकिस्तान टूटने के कगार पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब है। 12 पाकिस्तानी उन्होंने किडनैप कर रखे हैं अफगान की फोर्सेज ने और 4 पोस्टें पकड़ ली हैं उन्होंने। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब है। 4 हिस्सों में टूटने के कगार पे, खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग अलग और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ में लेंगे। ये सच्चाई है। मगर पाकिस्तान मानने वाला नहीं। पाकिस्तान की आर्मी और ISI या आतंकवाद को भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 10,000 के करीब आतंकवादियों को इस तरफ नहीं भेजा तो वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम डालेंगे, ये पाकिस्तान को लगता है। तो ये सच्चाई है कि अभी उनके जो
कैंप हैं उन पे जाके हिट किया जाए। किसी जो तरीके मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, वो जानती है क्या करना चाहिए। मिर्जा साहब देखिए, ये मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां बाग शहर में जो एडहॉक एम्प्लॉयज होते हैं उनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। अब आप मुझे बिल्कुल ये बताएं कि वहां तो कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है कि भाई आपको तनख्वाह नहीं मिली तो आपको बेरोजगारी अलाउंस मिल जाएगा, या राशन मिल जाएगा, या आपको घर का किराया गवर्नमेंट दे देगी, या आपका बिजली का बिल वेवर हो जाएगा। तो 5 महीने से ये इनको तनख्वाह नहीं मिली, और अब ये कह रहे हैं कि 20 सितंबर को हम बाग से जाएंगे मुजफ्फराबाद और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके सामने हम धरना देंगे। राइट, इसी तरह से ये तो पीओजे के का ना। तो गिलगित बल्तिस्तान का भी आपको बताऊं कि वहां पे है नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, नेटको कहते हैं उसको। उनके मुलाजमीन को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके घरों में फाके पड़ गए। अच्छा, दोनों पीओजेके में और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तनख्वाहें ना देने की वजह से जो है उनके बच्चों को स्कूलों से भी निकाल रहे हैं क्योंकि फीसें नहीं है। अच्छा, पहले ये होता था कि अगर बेटे पोते पोतियां नवासे नवासियों को स्कूलों में कोई फीस का मसला हो जाए या कोई बिजली के बिल का मसला हो जाए तो जो रिटायर्ड माँ बाप होते थे यानी वालिद, वो अपनी पेंशन में से चलो थोड़ा दे देता था कि ये लो अभी चला लो फिर मुझे दे देना वापस। तो पेंशन जो है वो वहां पे 15 महीने हो गए पेंशन नहीं मिली लोगों को। अब जिसको पेंशन पेंशन तो एक तो ये भी होता ना कि जिसको पेंशन मिलती है वो उसको लोग अपने घर में भी रखते हैं कि चलो यार कोई बोझ नहीं है हमारे पे, अपना खर्चा खुद उठा रहा है ये, ठीक है ना। अब एक बूढ़े आदमी या औरत का पेंशन नहीं है, एक बेवा औरत जो है उसकी पेंशन नहीं है, वो अपने बेटे के साथ अपने बहू के साथ 4-5 बच्चों के साथ एक घर में बैठे हैं, और जो बंदा कमाने को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो उस घर के अंदर कितनी टेंशन चाहिए होगी कि खाने को है ही नहीं वहां पे। लिहाजा इस सारी सूरत में जो आप कह रहे हैं वो मैं समझता हूं कि हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि भारत जो है अब उसको संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि ये तो बाज आने वाले नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इसका एक मुस्तकिल जो है परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को मैं आ रहा हूँ एक खास मेहमान के साथ, और जनरल साहब भी होंगे, और एक खास मेहमान के साथ आ रहा हूँ जिन्होंने आज का श्रीनगर का ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था ट्यूसडे लंदन टाइम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद। Are you ready to build a rewarding career in finance? I was between jobs after my son was born. I worked in a call centre. Didn't go to university. I had a look at the AAT website. I never saw myself as an accountant. You don't need to be good at maths. It's given me the skills I need to get a more rewarding job. It's made me feel really proud to have my qualification. From school leavers to career changers, 80,000 people study AAT every year. Get the real-world skills employers need with AAT's qualifications and courses. Kickstart your future in finance. Search AAT. Family life. It's made of ups and downs, and those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. Win at staying in with broadband that works around you. Now you can get BT broadband, even at ultra-reliable full fibre, from only £27.99 a month on a 24-month contract. Plus, get a £20 money-back speed guarantee. And Norton Security to keep you protected online. Switch to BT today and win at staying in. Happiness is
Happiness is different things to different people. That's what happiness is. Etsy has home style gifts. Etsy has it. Knowing that these are £6, yeah, it's going to be difficult to go to. It wouldn't make sense for me to go anywhere else. Get prescription glasses from just £6 a pair at Select Specs. Get big thrills and small bills this autumn with BT. Save an epic £12 a month when you get BT broadband and TV, including Netflix and Now Entertainment. For only $39.99 a month on a 24-month contract. Make your house the home of action with shows like Fubar on Netflix and The Last of Us on Now. All for only $39.99 a month. Switch to BT today and win at staying in. Kenny would never compromise on Cushell's irresistible cushiony softness, and neither would we. In fact, we've packed in even more of it across the range. So if they seem to be lasting really, ludicrously longer, it's because they are. Try Cushell ludicrously longer lasting rolls. Join the flip side with the amazing Samsung Galaxy Z Flip 5 and claim a free Galaxy Chromebook Go worth £299 because they're better together. Hurry, go online or in store today. Vodafone. Pets rest a little easier knowing they have Pet Plan insurance. They can relax knowing 97% of claims are paid and that we'll never charge more for claiming. Sign up today and save 10% at petplan.co.uk. When our John passed, we wanted to give him the send-off that was right for him. He was always more at home on the sea, a proper no fuss and bother kind of guy. So we knew direct cremation was what he would have wanted. Co-op Funeral Care knows everyone is different. So if you want to give your loved one a simple alternative to a funeral, our direct cremation is available from just $1195 and you can celebrate them in your own way. To find out more, visit Co-op Funeral Care or give us a call. The UK's first human heart transplant has been completed, supported by the British Heart Foundation. We were a noisy generation, but it might be something quiet we do that becomes our greatest legacy. Leave a gift in your will to the British Heart Foundation and fund groundbreaking research that could help save millions of lives. Search BHF Wills. Our pets have been right by us, so we do right by them. With Bella and Duke raw pet food, we thank them. Not just a life well lived, a life well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box, plus access to our 24-hour video vet service. Good evening, ladies and gentlemen. We would like to welcome you in our special program, Thame Speaks, and that's on MHTV 711. Every week we discuss different ideas, we discuss with different people, those who are experts from their own field, or social reformers, or spiritual people, or political people. They come and they share their own experience with us. That experiences enriches us. That experience also helps our audience to develop their own thoughts and sharpen their thoughts.
Once, Osho has written a beautiful thing, and he said, one thing you have to walk and create the way by your walking. You will not find a ready-made path. It is not so cheap to reach to the ultimate realization of truth. You will have to create the path by walking yourself. The path is not ready-made, lying there and waiting for you. It is just like the sky, the birds fly, but they don't leave any footprints. You cannot follow them. There are no footprints left behind. I think he has summarized the philosophy from the Eastern world, that everyone has to create their own pathway. We met a lot of people, those who has created their own pathway, and finally they realize the ultimate truth. So it is our great fortune that we meet different type of people, those who are on this pathway, those who are in the process to realize the ultimate truth of human life, and those who are acting to help other human beings so they can also realize the ultimate aim of human life. So today we have a special guest, and she is Global Ambassador of Mohanji Foundation. She is also President of X Foundation, Director of ERYT, and she is also Director of Himalayan School of Traditional Yoga. I would like to introduce and welcome our guest, Devi Mohanji. Devi ji, welcome to this program today, and it's great to have you in this Same Speaks program today. Thank you, Jalal. We have discussed a lot of things in the past, but I think this is an opportunity for all of us that our audience will also benefit from your expertise and your experience. I think a lot of people, when they talk about spirituality, when they think about Eastern philosophy, normally they expect someone from the Eastern country, someone from India will come, and then they will try to share their experience. It's rare when people see people from Europe or America or Canada that they will come and then they will share their expertise with all of us. And it's this is an interesting thing, because once God said, Sabe Bhumi Gopal Ki, means the whole land belongs to the God. And I think God belongs to everyone equally. So today we will start our discussion, but before that, quickly, I really want to know about your childhood, your personal experience which you have experienced, and finally I want to reach to the next stage, that how those experiences shaped you and pushed you to adopt and to accelerate your own life in this spiritual pathway. Yes, well, in short, I don't define myself by any of the roles I play, by any titles. I simply am someone who is, walking the walk, not just talking. I'm inspired by Mohanji, who is someone who has built himself up from scratch. We do not have a ready-made path. It's called the path of pathlessness. Appropriately. And I'm inspired by the quote you just beautifully chose by Osho, because it's true. Finding one's own path and actually feeling the depth of that truth resounding in your heart when you know, yes, that click happened, I got it, this is my path and this is my higher purpose. When that happens, then we truly start living. I was somebody who was searching a lot. I was suffering, I went through a war, I went through very big ups and downs of life. So I'm 44 at the moment, but I feel like I lived 144 years, in terms of experience and the travel and the intensity, depth of experience. There's just so much. I'm writing my autobiography now, so hopefully by next year it will be shared. I come from former Yugoslavia. I became a refugee at the age of 14, and that's where I grew up, because there was no more childhood or teenage. Once you are in a situation where you are put down, humiliated, you face hunger, you face complete insecurity of life. You don't know whether your parents will be there for you, whether you have something to eat tomorrow. These are moments of life when you re-examine everything. I also had a near-death experience in the year 99, where I left my body and I was sent back by divine, because it was not my time. And I was sent with a powerful message. It's not your time yet. You have not fulfilled your mission. And your mission is to serve the unity.
So I feel this was the moment when my path of yoga started, and I haven't I didn't know about yoga at that time, but I started searching, what does it mean to serve the unity? Why am I here? Why was I sent back? And I've never felt the same after that, because once you leave your body and you come back, you know that you are not this body. So right now, most people identify with their body and with their roles in the society. I do not, because I clearly remember that feeling when I was completely expanded. And then how disappointed I was when I came back and looked at my hands and felt reduced back into this kind of matrix that we live in. Here, when you mentioned, then suddenly I remember the word yoga also means when you join two things together. That's also maybe a synonym for the unity. Yeah. So you were searching yoga on internet, on computer, and then suddenly how did you introduce yourself to this vast ocean of spirituality? Okay, well, the way yoga came into my life was very interesting. This near-death experience happened at the year 99. I was working for the United Nations. That was my first job in my life, United Nations. And UN opened the world to me, really widened my horizons. And I felt that diplomacy is my path. I wanted to be somebody who really stands for peace and serves peace. However, when after this near-death experience happened, the next big thing that happened was a conscious astral body travel. At a time when I didn't know I had astral body, I didn't know anything about aura, chakras, none of these things. And that's where I met a beautiful, radiant, powerful yogi in the middle of a desert. And it was a very vivid experience, and I didn't know who he was. And then 4 years later, I received this amazing scholarship for my master's degree in America. And one day in the library, on my way to a restroom, energy tickled me from a bookshelf. And I followed the ray of that energy, and I found this beautiful book with orange cover, and it was Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda. And when I opened the book, right on the left side page was this big photo of Mahavatar Babaji. And that's when my path of yoga started. When I read that book, I cried for days, literally. I felt that the answers were for me, that this book was written for me. It gave me all my answers because I cannot find the words to explain how deeply I was searching. When you leave your body and come back, when you go through some really tough experiences of life, your searching is very deep. You dig deep. And for years I waited for answers, and I could not find them in my church, among my friends, in my school, in my books, in my friendships. And then this book came, and it just blew me away. It just totally placed me on my path, and I couldn't wait to get out of America and finish this master's degree. And I was not at all attracted by any of the job offers I got. I was not impressed with any Fulbright speaker or none of it. I even tried to explain to my other friends who also won this amazing scholarship. It's called Peace Studies. We were all from war-affected areas of the world, and we were given this amazing scholarship. And it was really a fascinating experience, but none of them were really interested in what I was saying. And then I realized that they will not resonate because they don't have my background, they don't understand what I'm not able to convey, how deeply impressed I am by this book. And in that book, Yogananda said that the greatest thing you can do in your life is to find a living master, to find a guru. And that's where I understood the depth of the Sanatana Dharma and the Vedic teachings, the understanding that divine is within. And if you have physically a person who actually embodies Guru Tattva, and to be in the presence of such a person, that this is the greatest achievement, and to then have clarity on why you're here and how divine can express through you. So, this book gave me all the answers, and somehow the next phase started in Dubai, where I got my first job. And that's where I started going for yoga teacher trainings. I went through different spiritual seminars, this one, that one. I was still searching and searching.
And that's you were searching for the real guru. Yes. The guru who will be in the form and shape of a human being. I think, yeah, you know, when we discuss about this whole journey, then the first thing which comes to everyone's mind is that this particular question should come in our mind, that we really need a pathway. That is the first stage. Second thing is, when you have this question, definitely there is a quest, there is a search, there is an inner hunger or inner fire which pushes you that you should try to find out, you should try to go through all these different pathways and try to find out which pathway is the correct pathway. Yes. And then third thing is, where you reached that finally you realize that this pathway suits better, and maybe I just need a guru who can help me, or who can basically help me to achieve my own God who is residing in my own body. Yes. Yes. So what happened in the next stage then? Okay, so while living in Dubai, I first went through all the spiritual trainings and stuff, but sincerely nothing really clicked. You know, I was also busy with yoga training, martial arts, salsa dancing, scuba diving. You know, I kind of went through the worldly experience. And Dubai, you know, when you have a good job with a good salary, Dubai is the place, you know, for going out, having fun, having all these experiences. But at some point I realized that I was, with all this intense activity, one after the other, I was filling up a hole. There wasn't real fulfillment, was not happening, you know. And that's where one holistic doctor from Croatia appeared. She had the latest camera for scanning your aura, and she was doing a project of studying how humanity will evolve. So she has this, it's called GDV camera, next level of the Kirlian photography. And with this GDV camera, she wanted to scan the auras of masters. So she invited me to join her, to go to India with her, and we would visit different masters, and then she would be doing the study, and her aim was to also scan the aura of Satya Sai Baba. So his was the last stop on this journey. It started with Hira Ratan Manek, who, sun gazing. He doesn't eat food. Yeah. He's very famous, and NASA did research on him. And then we visited some other masters as well, and then Devi Yama, and then Satya Sai Baba. So in the end, she did not get a chance to really scan the aura of Satya Sai Baba, but we were there for 10 days, at that time, it clicked. There was experience that Satya Sai Baba came into our room with his astral body, and the whole room lit up. It was full of golden light. And what came to me, like I was not able to fully enjoy this experience because I was in a semi-state where I saw how one married man was like fantasizing about me, and it's really not my fault. I didn't do anything. It just happened that he found like this vision of ideal woman in me, and because I actually had everything except relationships. There was this feeling of I'm much more mature than my physical body, you know, and what I am physically is not fully matching what I am spiritually, you know, like the depth of spirituality doesn't reflect on my behavior and my looks. Yeah. So if you see me as a Western woman, I'm usually very joyous. I like to dance, but that spiritual side is not seen, you know. So relationships were not happening, you know. And I realized that, yeah, the reason why I'm not happy is that I do not have a proper relationship, and I'm not able to find the right partner because I get honestly bored with men who just like, you know, kind of drool after me, or with men who are superficial and take pride in their looks or their money. None of that interests me. So then she said, okay, in the presence of somebody like Satya Sai Baba, why don't you first gain clarity in what you want from your relationships? Because he showed you that when he appeared with his light body in the room. My obstacle was that feeling of incompleteness in terms of relationships. So that took me into deep contemplation. And after a while, I realized that if I'm ever to marry, I would like that husband to be a spiritual master. So when I verbalized this, the next thought that came was, but masters are not available for marrying, you know, they're somewhere in a cave, or they're celibate, or, you know.
So Dr. Maya, her name was that, she said, who said that? Like, everything is possible. Like, you are in the aura of a master now, and I think there are many options, Don't limit your possibilities. So she said, why don't you just surrender all this to Sai Baba, and then let him worry about it. You don't have to worry. If you surrender, it's his job. Yeah. So I didn't know this was possible, So, so what I did, I actually wrote it down. So I said, dear Baba, if I'm ever to marry, may my husband be also my spiritual master. If you just don't mind, it happened in which year? 2006. 2006. So it's just 15 years ago. Yeah. Yes. Yeah. And the second, I said, I don't care about the color of the skin, eyes, hair, none of this. But I come from the Balkan region, and kind of feel like strong men. So he should be like strong and a leader and that type, such as just that part. And thirdly, the most important thing is that together we serve the world. We are in sincere, selfless social service together, So that was what I wished for. I wrote this down and I folded the paper, I surrendered it, and I frankly forgot about it, So 1 year has passed, and it was January 2007. I became a certified yoga instructor, and there was a mega yoga event happening in Dubai for the first time. And that was the time when Mohanji came for this yoga training, simply because he had a bit of lower back pain, and his friend was bugging him, come, this is going to help you, come, you have to come. So Mohanji has been very introverted, and he had very deep inner experiences, and he never liked to be share those experiences with he was completely in silence. So when I met him, he was completely silent. He looked like nothing special, shorter hair, like similar like you now, maybe just a bit of beard was there, and like just sportswear, So in terms of looks, you wouldn't like have noticed him, but I have felt some energy when I passed by him. Is that energy called love at first sight? I honestly forgot about what I asked from Sai Baba. Yeah. I was not at all looking for a man. I was not in that energy. I was busy with my yoga training. I had also a job in some Australian company. I had my yoga training. I had all this stuff. So I was not at all looking for a relationship, and this thought was not there. The only thing that happened was that I, just a couple of days before this yoga event, I suddenly decided that I want to find like a smaller team of people who do charitable work, because I want to do hands-on charity and like give aid into the hands of the really people, poor those who really need. Feel that energy of social service, because before that I was in a bigger organization, and it was what they called seva was like more marketing. Yes. So I said no, I want to do actual seva. So that was my thing, and that's where it just so happened that one of my Indian colleagues in this Australian company was part of Amukare Charitable Trust, and he told me about Mohanji. And then the funniest thing ever happened. I said, okay, let me check him out on the website. So I went into Amukare website, I clicked it, and my phone rang. And I was intrigued, so I'm looking at my phone, it's ringing, but nothing is on the screen. So this is impossible, Then I realized, I had a ringtone. It was a Japanese composer, Kitaro, who has like more than 100 songs or compositions. It's an instrumental from Kitaro, which is very rare. What happened is that Mohanji chose the same instrumental for his website. So when you click on the website, this music comes. And I thought this was my phone ringing. Yeah. This was so strange. This was that weird synchronicity that's a bit too much, So that was the first hint. I call this the Leela of Sai Baba. Yes. It's not the Leela. It's just impossible. So that was number one. Then this friend said, you have to meet Mohanji, blah, blah, but he forgot to say that he's at this yoga training. So I didn't know that. So when I was at the yoga training, at some point, I passed by Mohanji and I felt it's like a wave of energy. And then what I did, frankly, it was really funny. Sometimes I was on the stage demonstrating yoga asanas and Surya Namaskar and all that. And sometimes I would be correcting people's asanas in the audience. And that time we had
5-minute short meditations. If I know the meditation is coming, I just go to that side where this man is, whom I noticed by this energy, and I kind of sit there and then I meditate in that energy. So, but I didn't know who he was or nothing. So towards the end of the yoga training, everything fell into place, and this colleague introduced me to Mohanji, and I realized it's him. And on top of that, when he kind of looked into my eyes, I felt that I was like, like a scanner goes zzz, zzz. It goes into the body, scans everything, and then finishes the scan. Yeah, I felt totally scanned, naked kind of, and I kind of breathless for a moment. So very strange feeling. And there was no time, we were in a rush. I remember I took his phone number and I wrote Mohan-soulmate. I don't know where that came from. I just kind of, I usually put name and something because I meet so many Indian people, I can't keep track. There's so many names. So I always put some explanation. Yeah. And that was the first spontaneous thing that popped out. But I still did not call him or think of him. It was funny. I was too busy, So that's where the funny part came. Sai Baba intervened, and he telepathically communicated with Mohanji about me. Yeah. And that was the funny part. So, I mean, he literally saw that I'm so blind, I can't put 2 and 2 together. So then he has to intervene, and he has to tell this to Mohanji. And I always laugh about it because it's just really funny, if somebody told me that, I would never think this was possible, that somebody like Sai Baba intervenes in your life to bring you your husband, So then I think miracle happens. This was all, So whatever we discuss, it is definitely a love. It's also a leela of the God. Yes. And when all these things happen, then being a scientist, sometimes we don't have any explanation about all these things which happens. We do not have any explanation about that synchronicity. We don't have any explanation about all those things which happens for a reason. But when you see in the end, you definitely see a pattern, and you feel whatever has happened in the past, there was a reason behind that. Yeah. But when these things happen, that's why people sometimes they say, enjoy the process rather than the outcome. Enjoy the journey rather than the destination. So I think the description of this love and the Leela, both, I think it is just matching up, and we have come to this particular stage where we can clearly see that this particular Leela was maybe just because of the social service which you are doing at the moment, where you have created a few organizations, those who are doing the real seva work, not only in Europe, they are also doing work in India as well. Yes. Now, we will also discuss about various aspects, but in 2007, you created Mohanji Foundation. No.